Hello everyone, welcome to my channel घर से गुरुकुल. India is a big, beautiful and colorful country जहाँ हर मौसम और occasion से related festival मनाया जाता है. Now, when winters are gone and summers are approaching और spring season यानी बसंत ऋतु चल रही है जिसमें नेचर सब तरफ इतने कलरफुल फ्लावर्स बिखेरती है, सब पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, तो नेचर के साथ साथ हम इंसान भी एक ऐसा कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिससे सब तरफ और भी ज़्यादा कलरफुल, हैप्पी और जॉयस एटमॉस्फेयर हो जाता है. यस, यू गॉट इट राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट होली. इट्स माई फेवरेट फेस्टिवल एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों का ये फेवरेट फेस्टिवल होगा. होली is a 2 days festival and it is celebrated on the full moon day of Hindu calendar month Fagun. This day comes after 40 days of Basant Panchami and as per Gregorian calendar ये दिन celebrate किया जाता है mid March में, sometimes at the end of February month and sometimes in first week of April as well. जैसा कि मैंने बताया, होली is a 2 days festival, तो होली का पहला दिन मनाया जाता है छोटी होली के नाम से. And this छोटी होली is the last day and full moon day of Fagun. It is also called Holika Dahan. This name and this day has a special story related to it. As per Bhagavad Puran, there was a demon king named Hiranyakashyap. He was very cruel and did not believe in God. Rather, he considered himself as God because he had a boon that he cannot be killed by a human or an animal. Neither he can be killed in a day or at night. He can neither be killed on land, nor in water or in the air, neither indoors nor outdoors. Neither he can be killed by a handheld weapon nor by a launched weapon. और इसी वरदान के चलते ना तो उसे दिन में मारा जा सकता है, न रात में, ना उसे कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना उसे घर के अंदर मारा जा सकता है, ना घर के बाहर, ना उसे किसी अस्त्र से, ना ही शस्त्र से मारा जा सकता है. So, it was because of this boon that he started thinking कि उसे कोई नहीं मार सकता और वो ही भगवान है. Also, he told his descendants to worship him like God. Everyone in his kingdom was forced to obey him, but his own son Prahlad, who was a firm believer of his deity, Lord Vishnu, यानी कि प्रहलाद जो कि विष्णु जी का परम भक्त था, उसने मना कर दिया हिरण्यकश्यप को भगवान मानकर उसकी पूजा करने से. He used to chant Shri Hari day and night. This made his father Hiranyakashyap very angry and agitated. He tried several cruel things, many possible things, but he could not shake Prahlad's belief in Lord Vishnu. तो जब बहुत सारे तरीके अपनाने के बाद भी प्रहलाद का विश्वास भगवान विष्णु से कम नहीं हुआ, तो आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी. और होलिका के पास एक चोगा था यानी क्लोक, जिसे अगर वो ओढ़ ले तो आग उसे जला नहीं सकती थी. So, keeping this in mind, Holika decided to sit on a pyre along with Prahlad. तो तय किए हुए दिन पर होलिका अपना चोगा पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर
जलती हुई चिता पर बैठ गई। प्रहलाद श्री हरि का जाप करता रहा और जब चिता की आग शांत हुई तो प्रहलाद उसमें से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। While on the other hand, Holika got burnt and died. This incident provoked Hiranyakashipu even more, and he decided to kill Prahlad by himself. When he tried to do so, Lord Vishnu appeared in his fourth reincarnation as Lord Narsimha, which was half man and half lion. It was time of dusk, which was not morning nor evening. He held him in his lap, which was not on earth nor on sky. He sat on doorstep, which was neither inside nor outside the house, and he killed Hiranyakashipu with his lion claws, big lion claws, which was neither a handheld weapon nor a launched weapon. So that's how Hiranyakashipu got killed and Prahlad was saved by God. This day is celebrated as होलिका दहन और सभी लोग कॉमन प्लेसेस पर सूखी लकड़ियों से होलिका की चिता बनाते हैं। उस पर ड्राई काउडंग केक्स यानी कि सूखे उपलों की मदद से माला पहनाई जाती है और शाम को उसे जलाया जाता है। People pray that just like Holika, all their evils will get burnt with it. And as just Prahlad was saved by God, उसी तरह उनके अंदर की सभी बुराइयां इस होलिका के साथ जलकर खत्म हो जाएं और सिर्फ अच्छाइयां रह जाएं। इस तरह ये फेस्टिवल होली बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। Not just this, but when this holika is placed at common places on the day of Choti Holi, married women go there to pray and offer homemade delicacies. Also, people make small holika at their home as well. और जब बाहर होलिका जलाई जाती है तो वहीं से आग लाकर घर में भी होलिका जलाते हैं। क्योंकि होली का फेस्टिवल आने तक खेतों में खड़ी हुई फसलें भी पूरी तरह पककर तैयार हो जाती हैं, इसलिए इस दिन गेहूं की बालियों को होलिका की आग में भूनकर उसे प्रसाद की तरह घर में और अपने आसपास में भी बांटा जाता है। So that's how Holi is celebrated as a harvest festival as well. तो ये तो थी छोटी होली की कहानी। अब बड़ी होली या दुल्हनडी, रंग वाली होली, धुलेटी या फगवा की स्टोरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। आइए जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार कैसे बना और why Holi is called a festival of colors and friendship. The legend behind रंग वाली होली और बड़ी होली is that when Lord Krishna, who was the seventh reincarnation of Lord Vishnu, was young, he was attacked by many demons and demonesses sent by Kans. One of them was Putna, who secretly came as an impressionist to feed Lord Krishna with her poisonous milk. But Lord Krishna was aware that she is a demoness. तो लॉर्ड कृष्णा ने उसका दूध तो पिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि पूतना को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस पॉइजनस मिल्क की वजह से लॉर्ड कृष्णा का स्किन कलर हो गया ब्लू। नाउ ही गॉट वरीड। अब कृष्णा जी को ये चिंता सताने लगी that राधा जी will not like him anymore due to his dark skin tone. But when Radha ji came to know about it, she took her favorite color and applied it on Krishna ji's face,
Since then, this ritual of smearing color on your near and dear ones started. यही नहीं, बल्कि दुश्मनी भुलाकर फिर दोस्ती शुरू करने के लिए या परायों को अपना बनाने के लिए भी बड़ी होली या दुलेंडी के दिन लोग सभी को रंग डालते हैं। Now, let's talk about the celebration part. There are many parts of India where Holi is celebrated for more than 2 days. First, let's talk about Brij. In Brij region, Holi lasts for more than a week. Here people have a different way of celebrating Holi. People here not only play with colors, but the couples play Latmar Holi. Yes, Latmar Holi, where men carry a shield to protect themselves and women carry a long, strong stick which is called lat. Women beat men with these lats and men try to protect themselves from getting beaten. Different Holi songs related to Lord Krishna and Goddess Radha are sung in local language. While in Barsana, this Latmar Holi is played with a twist. Here, women follow men with their sticks who try to run away with their shields. Though they keep singing inviting and provocative songs for women. In other words, they both try to challenge each other while playing Holi. Isn't it interesting? Now, let's go to Vrindavan ki Holi. Vrindavan region of Mathura is famous for its Phoolo wali Holi. Here, people not only play with colors, but at common places and community places or in temples, people gather and play Holi with flower petals. Here, Holi lasts for a total of 16 days. Now, in Kanpur area, Holi lasts for 7 days. This tradition was started by the freedom fighters of first freedom struggle of 1857. It ends with Holi Mela, held as symbolic unity among Hindu and Muslims who fought together against British. It marks the end of Holi celebration in the region. In Gorakhpur district of UP, Holi starts with a celebration called Holi Milan, which is considered to be the most colorful day of the year in the region. In Bihar and Jharkhand area, Holi is celebrated in same way as UP. Holi Dahan and Holi Milan celebration is done in almost the same way. Holi is known as Phagua in Bhojpuri dialect. Now let's go to Uttarakhand's famous Kumauni Holi. In Uttarakhand region, Holi is famous by the name of Kumauni Holi. Here Holi is celebrated in 3 forms such as Baitki Holi, Khadi Holi and Mahila Holi. जहाँ बैठकी होली में लोग रागों पर आधारित गीत गाते हैं जो दिन के हर पहर के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, and these are mainly spiritual songs sung nearby temple areas. वहीं दूसरी तरफ खड़ी होली मेनली कुमाऊं के ग्रामीण इलाकों में खेली जाती है, जिसमें लोग ढोल बजाते हुए गीत संगीत की धुनों पर नाचते झूमते नजर आते हैं. In Kumaon region, the Holika pyre for Choti Holi is prepared at least before 15 days
from Dulandi. It is also called Cheer. In this Cheer, the Cheer Bandhan ceremony, where a branch of green paya tree is kept in the middle of each cheer. और मज़े की बात ये है कि हर गांव जिसमें ये चीर बना होता है उसे दूसरे गांव वालों से अपने चीर को बचाना होता है, जो कि खेल खेल में इसे चुराने की कोशिश करते हैं। इन वेस्ट बंगाल, होली इज नेम्ड एज डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा और स्प्रिंग फेस्टिवल। It is called Dol Jatra because on the day of Holi, people wear saffron or white color clothes. They play dhol, veena and ektara. And Lord Krishna and Radha Ji's idols are placed on a palanquin, and the whole toli takes a round of the main streets of the city and villages, which is called a yatra. इस यात्रा के दौरान in West Bengal, Holi is celebrated In West Bengal, Holi is named as Dol Jatra, Dol Purnima or Spring Festival. It is called Dol Jatra because on the day of Holi, people wear saffron or white color clothes. They play dhol, veena and ektara, and Lord Krishna and Radha Ji's idols are placed on a palanquin, and the whole toli takes a round of the main streets of city and villages, which is called yatra. इस यात्रा के दौरान जहां महिलाएं ढोल और वीणा की तानों पर नृत्य करती हैं, वहीं लड़के और पुरुष सभी पर अबीर, गुलाल और रंग बिरंगा पानी फेंकते हैं। In Tripura, Holi is celebrated by the name of Pali, which means color in local language. Now, let's talk about Holi in Manipur. मणिपुर में होलिका दहन पर सूखी पत्तियों और तिनकों से बनी झोपड़ियों को जलाया जाता है। Before burning it, people do traditional folk dance called थाबल चोंगबा। छोटी होली के दिन से ही मणिपुर का ट्रेडिशनल फेस्टिवल याओसांग भी शुरू हो जाता है और पूरे 6 दिन तक चलता है। अब बात करते हैं रंग बिरंगे गुजरात की। Just like many other states of India, in Gujarat also, Holi is celebrated for 2 days. इन 2 दिनों में से छोटी होली की रात लोग होलिका दहन में कच्चा नारियल और मक्के की आहुति देते हैं। And as you know, Dahi Handi of Gujarat is famous worldwide. And one more interesting fact about Holi is that on this day, women beats up their brother-in-law with a sari rolled up in rope in a mock rage, and in return they get sweets from their brother-in-law. गोवा में होली उक्कुली के नाम से मनाई जाती है, जो कि एक्चुअली वहाँ 1 महीने तक चलने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल सिग्मो का पार्ट है। इन महाराष्ट्र, छोटी होली is called Shigma, and Holi celebration lasts
for 5 to 7 days. The main delicacy of Holi in Maharashtra is Puran Poli. Rather than playing Rangwali Holi on the second day of Purnima, they have a tradition of playing Rang Panchmi, means they play Rangwali Holi on 5th day after Purnima. Now, Holi celebration in Telangana and Tamil Nadu. In Telangana, Choti Holi is known as Kamuda, where children go from door to door to collect money for making Holika. In Telangana and Tamil Nadu, people worship Kamdev, the god of love, and his wife Rati on Holi. Holi celebration in Punjab is done with great pomp and show. They celebrate Holi by not just burning Holika and throwing colorful water at each other, but they also organize wrestling matches and fairs on the day of Holi. होली का त्योहार नाचने, गाने और खुशियां मनाने के लिए है और जब ऐसा त्योहार हो तो सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं बच्चे। Children on Holi not only play with dry color powder called gulal, but they also use water guns and water balloons to drench others in colorful water. In olden times, when there were no artificial or synthetic colors, people used to make natural colors using indigo, tesu flowers, beetroot, henna, hibiscus, tamarind, and other things. These colors were skin friendly. और यहाँ तक कि बसंत ऋतु जो कि मौसम बदलने पर आती है, जिसमें बहुत सी बीमारियों का भी खतरा होता है, ये रंग उन बीमारियों से भी हमें बचाते थे। अब होली की बात हो और बॉलीवुड की होली का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Our Bollywood's Holi is world famous. Many songs like Rang Barse, Holi Khele Raghuvira, and Holi Ke Din have made a special place in Holi celebrations. इन गानों की धुन पर झूमे बिना तो हमारी होली पूरी ही नहीं हो सकती। और इस नाचने झूमने के साथ ही होली पर बनने वाली स्पेशल भांग, गुंजिया और पकोड़े होली की मस्ती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। So, as Holi is round the corner, I wish you all a very happy Holi. Stay safe, play safe, and enjoy to the fullest. Thank you.